हेलो गाइस। तो ये आज की हमारी वीडियो है और ये आज हम बनाने वाले हैं बैनर फॉर वेबसाइट एंड दिस बैनर इज बेस्ड ऑन किड्स वेयर एंड वी विल स्टाइलाइज और वी विल डिज़ाइन दिस बैनर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अप we have to use file new A3 size paper. जनरली जो मेजरमेंट दी कि मतलब आपको सेटिंग चेंज करने के लिए भी मतलब पहले से ही हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ से हम चेंज कर देंगे तो हमारा वही चीज़ हमारे पास मिल जाएगी. दिस इज आवर प्रोफाइल एंड वी विल मेक दिस बैनर ऑन किड्स वेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस बॉर्डर्स. तो वी विल यूज rectangle tool and just draw a rectangle according to the width whatever you want or what suits your design. Okay, this is much bigger. We will shorter it. हम इसको हमारी सेम साइज में रहे उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे शिफ्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक. जब हम शिफ्ट यूज करते हैं, शिफ्ट की वजह से हमारी जो डायमेंशंस होती हैं, हमने रेक्टेंगल बनाया है उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो सेम रहेंगी, हमारी डिस्टॉर्ट नहीं होगी. तो वी विल जस्ट रेप्लिकेट इट. हम इसकी कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे से. हमने 4 कॉपी बना ली हैं. 4 के बजाय हम 2 ही बना लेते हैं, 1 ही बना लेते हैं. एक ही कॉपी काफ़ी हमारी. तो वी विल जस्ट शिफ्ट इट लाइक दिस. जहाँ पे हमें जगह हमारी दूसरी बाउंड्री पे रखनी है हमें, तो यहाँ ये हमने रख दिया. ओके, now again one copy, control J, just place it here. In the middle, its middle is 22. We have just placed it in the middle. Again control J and just control T. उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री. rotate 90 degree. Okay, now just places according to your page with shift. अगर जब भी हम शिफ्ट यूज करेंगे हमारी डायमेंशन सेम ही रहेंगी, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग शिफ्ट ही यूज करें. तो हम इसका कॉपी ले लेंगे, डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल जे and here it is done and we are done with our borders. Okay, हम कलर चेंज कर सकते हैं इसके. just like this, layer, rectangle 1. रैशनलाइज करना पड़ता है हमें इन शेप्स को. अगर हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं इस पर, तो हम यही कलर उठा लेंगे जो हमने यहाँ पे डाला है and we will place color it like this. rectangle B, rationalize, color. rectangle 3, rationalize, color. rectangle 4, rationalize and color. You can google it. आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी ऐसी किड्स की. we have this image. We will just use move tool and it's here. First of all, control T, flip horizontally, and now shift and just adjust this according to your rectangle with shift only.
One part is done. Okay, now we have to just create these designs. So we will use rectangle tool. Just place it here. We need to change the color. So हम ये कलर पिक कर लेते हैं यहाँ से. And we will rationalize it and we will color it. Done. Now this bidingo.com हमें वेबसाइट डालनी है हमारी. ये भी हम रेक्टेंगल टूल से ही करेंगे. तो हम इसको छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं जो कि हमारे इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हो जाए. वो just adjust this, shift then drag. Perfect. Enter. हम एक कलर पिक कर लेते हैं. कलर आप कोई भी कर सकते हो जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छी लगे कलर. You can put any color. It's just up to you. First of all, we will design all the things and then we will place the text. So we have to design these things. So we will just simply use pen tool, new layer. Just start from here. If anything goes wrong, just use Control plus Z. It will just rectify your design. Undo your design. Okay, we want this color. It goes perfect, I guess. We will change a little bit. Now we will pick this color. Okay, new shape, pen tool, new layer. And this is done. Created. These designs also. So we will just simply use, first of all, pick the color, whatever color you want. Now use pen tool, new layer. हम न्यू टेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ पे, शॉप नाउ, कैपिटल, or you can use whatever type of font you want. साइज हम 30 रखते हैं फॉर टाइम बीइंग. इस राउंड रेक्टेंगल का हम कलर चेंज कर देते हैं. हम ये वाला कलर ले लेते हैं. सो लेट्स गो फॉर दिस. फाइन. Now one arrow for this. So we will just pick this. Okay. Now what is left? The logo. First of all, we will write the website.
तो here it is www, whatever website you want, or just according to your according to you, whatever website you want, just type it. I'm here taking this website. And now just placing this website here. Done. And here we will type kids fashion. Just change the text according text font according to whatever you want. Okay, let's take up this only. Okay, we have taken this. We will change the color. It should be white because ब्लू पे वाइट कलर बहुत अच्छा खिल के आता है. एंड यहाँ पे ना कैरेक्टर करके होता है, उसमें आप ना ये जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना उनको दिखा सकते हो. तो we have taken 38.51 point difference, and the 48 is the size of text. Kids fashion. Okay, now just a logo and inspired fashion, inspired children fashion. So we will write inspired. Just take the color black. Font, let me see it. Amazing kid font. The font I had used in this is Amazing kid font. Next text is inspired children fashion. The children font I have taken let me see. Okay. Band. Now fashion. फैशन का हम लेंगे अमेजिंग किड. और भी हम देख सकते हैं कि जोन सा हमारे उसमें मस्त लगे, अच्छा जो भी लगे हम उसका यूज़ कर सकते हैं.
fashion kit, I guess, is best. So we have taken fashion kits. Now control T and you can change the size of the text according to your design. Now just placement. Children should be small. 48 best. Inspired should be 80, I guess. 80. Perfect. Here we have almost done. Now just I will pick the logo from here only. You have logo where it is, just place it according to your control T. Now resize it. Enter. And here we have done with our poster, sorry, with our banner. And this is a banner of kids wear for website. And now you can save it from here. File, save as. Photoshop, format is Photoshop, or you can use format Photoshop PDF for PDF, or JPEG for pic. Okay. Thank you guys. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel, and please share my video to those who need these kinds of short and easiest method to create banners and other things for websites or for creative things also. Please share my videos, guys. Thank you.